He is the most important part of the. Why are you in the corner? No, he is the most important. You should You are the, everything starts from here. two bookend holders. Yes. You hold up the books. देखो मैं ना धनी सेठ हूँ मूवी मेकिंग को Bookshelf में the most important part. Yeah, here we go. Let's have a question, please. Shoot the question, please. Well, here we go. Question number 1, please. Yeah, very good evening to all of you. Subhash, could you just elaborate on like today's evening, what it was all about? We are very happy that we have been associated with a world-class designing school known as ECD, School of Designing and Creativity. And this is a step ahead of Risley Woods with the support of the industry and support of many great artists like them to develop our younger generation with much more of artistic skill and to the creative side part of it. And need of for this. We are glad with the biggest design school from France, and Mr. Patrick was here. Yes. Yeah. So it is a further step to create a new generation with much more artistic skill. प्रहलाद, आपका इसमें किस तरह से योगदान रहेगा? इत्तेफाक पहले मैं मिस्टर पैट्रिक से मिला क्योंकि I was at design what do you call conference in IIT and Mr. Patrick had just come back from a long flight from Paris and he was looking a little lost. So I engaged him in conversation thinking that as a host we should be friendly to our guests. I found that he spoke very little English, so we went into sign language. He had his wife with him who spoke better English than he did. So they said they're looking for a partner in India because they felt that India was not only ready for global design but also had great cultural roots in design itself. So it wouldn't be very difficult to teach our people design because design is everywhere. You reach out to touch anything, it's designed. So to become aware of design was what his intention was. And he wanted to collaborate with an organization which would actually reach out and touch as many people as possible. So the only person I could think of was Mr. Subhash Ghai and Meghna. And I said, I've got the right partners for you. Don't stop looking anywhere else. Just go straight to Whistling Woods because it's a matter of mutual need. You need them and they need you. And it's going to be absolutely like magic. And it was. Yeah. Purpose क्या है इसका? The purpose is, देखिए, अगर आप किसी चीज़ को डिज़ाइन करेंगे तो उसका जो वैल्यू है वो बढ़ता है by 100 times. Just by changing the shape or the design or the look or the feel or the taste or the color or even sound for that matter. You can add value without actually spending any money, but through sheer aesthetics and the use of space and the dynamics of space. So आपको तीव्र मध्यम मालूम है ना हिंदी म्यूजिक में क्या होता है? तीव्र मध्यम is not what you hear. Your ear hears it, but it is not something that is a part of what you call the melody. It is a in-between notes that you hear. That is design. It's a beautification of anything which gives you happiness, smile and a positive energy. And value, आप infinite. दुल्हन को ब्यूटीफाई करते हैं, उसमें कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन होता है कि एक साधारण लड़की भी इतनी खूबसूरत लगने लग जाती है. आप अपने घर को डिज़ाइन करते हैं, आप अपनी टेबल को डिज़ाइन करते हैं, आप अपने एक सलाद को खाने को बनाने को डिज़ाइन करते हैं. तो कितना फ़र्क पड़ता है कि एक अपने सलाद ऐसे रख दिया और एक सलाद आपने उसको डिज़ाइन कर दिया. सो ब्यूटिफिकेशन ऑफ थिंग एंड क्रिएटिव पार्ट चाहिए उसके अंदर. तो ये जो सारी स्किल है, ये सारा एक एस्थेटिक्स की जो डेवलपमेंट है उसके लिए ये पर्पज़ है उसका पर्पज़ ये है स्कूल का. तो इसमें किस डिपार्टमेंट्स के लोग शामिल होंगे? जितने भी कंसर्न हैं, लाइक हमारे पेंटर्स हैं, स्कल्पटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, everyone who is connected to the art. डिजाइन तो सबके लाइफ में है ना. Yes, everyone who is connected to the art. ये जो प्रोग्राम है ये स्पेसिफिकली विजुअल कम्युनिकेशन का प्रोग्राम है जहाँ पर जो आप विजुअली देखते हैं ब्रांड्स में, मार्केटिंग में, और वो जो डिज़ाइन उभर के बाहर आता है तो वो फिल्म पोस्टर्स में भी होता है, आपके एक वाटर मिनरल पानी की बॉटल पे भी होता है,
हर प्रोडक्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें डिज़ाइन है, आपकी शर्ट में डिज़ाइन है, हर जगह डिज़ाइन है। तो वो ये जो प्रोग्राम है वो इंडियन सोल को रख के, इंडिया की जो कल्चरल ट्रेडिशन है उसको रख के एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप इसलिए ले रहा है ताकि हम वहाँ से ये सीख सकें कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे। And there's so many times that you are very creative, but you are not able to exposed to so many different things which are happening in international market. But even in the Indian sector, we are growing as a very fast economy country. So बहुत सारी चीजें आपको पता है, लेकिन how to put them to action you don't know. So I have always supported education. I always say education is a must for all. And to have more academies, more colleges, more institutes which lead you to education and exposure and learning is something which is fantastic. And in fact we should have many more institutes like this which Subhash ji has made, and we all must applaud and appreciate that he's taken, Whistling Woods has taken a step forward to venture out from just designing and filmmaking to now come into serious design learning. It's a school of design which is going to focus on a lot of different things. Why are we here as an artist? It's if we think it's only digital, then we are not really needed to be here. But he's venturing out to slightly more serious learning, because art connects you to everything. For creativity, you don't have to really think that I'm an artist or I'm an architect or I'm a mass communication guy. If you have the mind to create, you must come to an institute to learn to take it forward to another level. It's natural, yeah. Yes. Would you like to ask? मैं ये पूछना चाहता था कि डिजाइनिंग से रिलेटेड अगर कोई भी शख्स होता है या फिर कोई यूथ होता है, उसे रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता, तो इस स्कूल के जरिए आप लोग क्या प्लान करें उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए, उनको रिकग्निशन नहीं मिलता recognition मतलब देने के लिए? Do you mean they would be also launching them or something? Or नहीं, recognition means what? रिकग्निशन मीन्स व्हाट? लाइक अगर कोई फिल्म रिलीज होती है, आर्टिस्ट बहुत सारे होते हैं, जैसे एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, उनको रिकग्निशन मिल जाता है, लेकिन आर्ट डिजाइन वगैरह बिल्कुल नहीं, डिपार्टमेंट होता है, बिल्कुल नहीं, ज्यादातर नहीं। देखिए आपने बंसाली की लेटेस्ट फिल्म देखी? बाजीराव। अच्छा, उसमें कितने लोगों ने नोटिस किया कि उस जमाने में जूते जो पहनते थे लोग वो बूट्स नहीं हुआ करते थे, और हम साउंड जो वेस्ट से लेके ठोक देते हैं अपने फिल्म पे, जो हर फुटस्टेप पे टॉक 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 की आवाज़ है। आपको कुछ फर्क लगा? बाजीराव में कौन सा साउंड था? वो जो जूते पहने थे उनने चूं चा। Now he designed that. It made a difference to you. To you, absolutely. And the film. I asked who was the sound designer. मैंने कहा ये तो अद्भुत है। अभी तक मैंने हिंदी मूवीज में इतनी डिटेल में किसी को नहीं देखा कि फुटस्टेप्स की आवाज भी अलग थी। So that's why you don't have to really get a launch pad. If your work is good, like I was saying upstairs, you will automatically get noticed. The sound designer, शायद तो हमें नाम नहीं पता है, but people who really recognize good work will want to know about them and will get in touch with them. Design is such a thing that the recognition comes immediately. Yes. अगर आप अच्छे If it is डिजाइनर हो, good. हाँ, अगर अच्छे डिजाइनर हो तो लोग तो immediately चकाचौंध हो जाते हैं। बिल्कुल. And we are all looking for It makes it आपके so सामने- attractive। talent. आपके सामने जो ये पड़े हैं इन लोगों, ये भी तो डिजाइन की है ना? installation. जरूरत तो बहुत है। Yes. ये भी डिजाइन ही, सबने अपना, किसी का अच्छा है, किसी का बहुत अच्छा। शायद बॉम्बे टाइम्स में recognition नहीं मिली, मतलब in terms of glamour, that is what the actors get, but this recognition is different because the employers जो employ कर रहे हैं लोगों को, they want graphic designers, they want communication designers, they want sound designers, production designers. The So there is a huge need. Value adding is huge। Yes. आसमान जमीन का फर्क हो जाता है। And your success is not measured with the And kind demand of the कितनी है? awards that you have. And in demand hand. It is इतनी है। your success should always be measured with the kind of good work you do, because good work will always be applauded. It's not that how many awards I have in my rack would make me a better artist, but what work I do. If somebody looks at my installations, watches a film of Subhash Ghai or any of the painting of Subhash and says, "This is fantastic." I think for me, that's as big as national award. No, but if you look at say Mr. Subhash Ghai's work, what is he known for in his films? No, showman तो वो हाथ दे दिया भैया, जब स्पेसिफिक क्या है? No, he designs his songs and his choreography like nobody else does.
to date. And that is what adds so much value to his films, because he designs them personally. He sits on the galla Personal with touch. a danda in his hand. Heroines also. Their extra care. No, you see, if you have that aesthetic sense, it helps you. My training at FTI, and when I watch so many beautiful films, world classics, so from there I could understand the cinema is much more than only storytelling. Yes. See, it is much more visual, much more in aesthetics, and you can convey so many things. Why the films become classic for 50 years, 40 years? Because the designing has been a very huge part in every department, whether the sound department, or the makeup, or the costumes, or sets, whatever it is. They are all matching and complementing the storytelling Yes. characters over there. And it becomes a one song. मौजूदा दौर की जो फिल्में हैं, अगर फिल्मों की खूबसूरती को देखें, डिजाइन्स को देखें, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वही तो डिजाइन है। आज के दौर में जो ट्रेंड चला आ रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, पर आप देखिए आज के तौर के फिल्म, ऑल द यंग डायरेक्टर्स, दे आर सो डिजाइन कॉन्शियस. They have a person on the set called a production designer, whose job it is to design the film, design the lighting, design the props, design the background, design the sets. Everything is today conscious. फिल्म में कोई एक्सीडेंट नहीं होता. जो कुछ फ्रेम में है वो हकीकत होती है, और वो डायरेक्टर और डिजाइनर का विजन होता है. ये ऐसे नहीं कि कैमरा कहीं लगा दो अंधाधुनी और तुक्का लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा. In fact, earlier they used to have, I used to notice as an artist that they would have these random, very ugly looking paintings at the back just to fill the wall. Yeah. But now if you see, you actually want to see at the background also, Yeah, because yeah. you want to see what sculpture is that, what painting is that. There's Yeah. more aesthetic sense There's which is coming to our present cinema, which Exactly. is very, very nice. And it's the same सुभाष जी, with आपका क्या कहना posters. है फिल्म पे? हाँ मैं भाई कौन सी भाषा में दे दूँ? मराठी, मराठी, हिंदी? मराठी. जो कंफर्टेबल है। नहीं, आपका चैनल को कौन सी सूट करती है? हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर लो. ऐसा? ओके, ठीक है, दैट इज ऑल्सो डिजाइन. बैड प्रोडक्ट. जी नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो स्कूल है, इसकी बहुत ज़रूरत थी अपने भारत देश में, क्योंकि अभी जितनी एम्प्लॉयमेंट है, जितने हमारे बच्चे लोग आ रहे हैं, और जैसा हमारी प्रगति हो रही है, तो उसमें डिज़ाइन की सख्त ज़रूरत है. अभी इन्होंने कहा फिल्म में है, एडवर्टाइजमेंट में होगी, प्रोडक्ट डिज़ाइन में होगी, जहाँ आता. नाउ आई हैव डिज़ाइन सो मेनी थाउजेंड बुक कवर्स, so many thousand, and I started 25 years ago. वहाँ की टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग की अलग थी. आज जो मैं कह रहा हूँ, अभी रिसेंटली आई डिड नसीर्स ऑटोबायोग्राफी किताब, तो आज की टेक्नोलॉजी बदल गई, तो वी हैव टू लर्न दैट Of course, you have to. एंड वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्फ. और आज की पीढ़ी के जो युवक है, उनको इतनी ज़रूरत है कि उनका ये फ्यूचर है. आज जो आप सवाल कर रहे हैं कि डिज़ाइन क्या है, तो डिज़ाइन आप खुद हो, लेकिन समझने की कोशिश है कि आगे होने वाला वक्त है जो डिजिटल है, जो कुछ है उसमें डिज़ाइन का एक पार्ट बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, उसकी वैल्यू बड़ी है. उसके ऊपर ऐसे कहते हैं, सो होल वर्ल्ड इज डिजाइन्ड. लाइक मेरे दोस्त ने कहा कि टेक अ एग्जांपल अबाउट अ नेचर, टेक अ एग्जांपल अबाउट अ ट्री, टेक अ एग्जांपल अबाउट लीफ, टेक अ एग्जांपल अबाउट अ फ्लावर. सब में डिज़ाइन है. आप यहाँ बैठी हो तो आपकी कलर स्कीम देखो, वो भी डिज़ाइन है. शर्ट, पैंट, शूज, हेयर स्टाइल, मेकअप, आईब्रोज, जो कुछ बदल रहा है उसमें इतनी डिमांड है डिज़ाइन की, और हमारे पास उसके लिए स्कूल नहीं था. हमारे पास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के कुछ स्कूल थे, इंजीनियरिंग स्कूल था, आर्किटेक्चर, पर मेन जो था वो सुभाष जी ने शुरू किया है. हमें उनको बुलाया है और हमने उनको प्रॉमिस किया है कि जो हमारा एक्सपीरियंस हो वो बच्चों की तरफ हम लेके जाने के लिए तैयार है. तालियां तो बजाओ. हमारी सरकार ने एक नया स्कीम लाया है, प्रोजेक्ट है वो स्किल डेवलपमेंट. सरकार का नाम Skill आते development. तो क्या कहना? Skill development. हाँ. उससे जुड़े कोई प्लान है आपका? हम ऑलरेडी जुड़ चुके हैं एक्चुअली. विस्लिंग वुड्स ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ जो टाइप किया है,
वो जो सरकार ने स्किल डेवलपमेंट पे वोकेशनल एजुकेशन का Correct. इंट्रोड्यूस किया है डिग्रीज, उसके अंडर ही हम And also उनके साथ teaching associate technicians हैं। which you were प्लस यस वी आर प्लानिंग टू टीच टेक्नीशियंस, लाइटमैन, उनके साथ भी स्किल डेवलपमेंट का ही, तो हम ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ और HRD मिनिस्ट्री के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं ताकि हम अच्छे प्रोग्राम्स डेवलप कर सकें फॉर वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट Can इंडस्ट्री। I add? Yes, please. Almost done, ना? Yes, please, Stop please, it, sir. उठ के चलिए कुछ और। No, no. जो इकोनॉमी डिजाइन हुई इन दिनों, पिछले दिनों में, इससे संतुष्ट हैं आप? इकोनॉमी डिजाइन हुई है। How the economy has been designed, like, Of course, बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल। थोड़ा elaborate करिए सर। एक एक करके। क्यों जब एक पेशेंट को पेट में दर्द होता है उसको ये असली सवाल ये पूछना था, बाकी इसको पूछो। जब पेशेंट के पेट में दर्द होता है तो आप या तो उसको सुई देते हैं या मुंह से दवाई देते हैं या पीछे से एनिमा देते हैं। दिस कंट्री वाज इन क्रिटिकल कंडीशन, इट रिक्वायर्ड एन एनिमा एंड ओनली वन मैन कुड डू इट, ही हैड द करेज एंड द गट्स टू गिव दिस कंट्री एन एनिमा। अब जब एनिमा मिलता है तो सबको तकलीफ होती है, सबको तकलीफ होती है, बट द एंड रिजल्ट इज टू मेक यू वेल, इज टू मेक यू हेल्दी अगेन। द एनिमा इज दैट फॉर एवर, क्या आपके अंदर को एनिमा पड़ा रहा और यू वॉक अराउंड। आप ये देखिए कि 2014 में हम लोगों ने एक अपनी नई सरकार चुनी, कोई भी था, ABC कोई भी होगा, उसकी वजह क्या थी मेनली कि सारी दुनिया, हमारे पूरा भारत जो है करप्शन से तंग आ चुका था। बात सही है कि नहीं? देने वाला भी लेने वाला भी, हर चीज़ हमारे बिहेवियर में आ गई थी, हमारे ब्लड में आ चुकी थी, हमारे स्वभाव में आ गई थी। ये बात करेंसी की नहीं है, ये बात नोट्स की नहीं है, ये मानसिक स्वच्छता की बात है। जब इस तरह से करप्शन में आ गई थी तो ही हमने एक बंदे को चुना कि भाई देखो शायद ये कुछ करे, और जब उन्होंने ये इंजेक्शन दिया कि जब पूरे एनिमा। तो वो उसी के लिए दिया कि जो चीज़ हम चाह रहे हैं, अब उसमें हमारा भी पार्टिसिपेशन चाहिए, हमारे भी थोड़ी पेन हमको भी तो सहनी पड़ेगी। मतलब हर चीज़ हमारे को प्लेजर मिले और हर चीज़ हमारे को घर बैठे बैठे पूरा हिंदुस्तान ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमें बाहर निकलना होगा, हमें उसका साथ देना होगा। इसी को तो बोलते हैं कि मेरा क्या कर्तव्य है एज ए सिटीजन, कि जो डिज़ाइन की गई इकनॉमी की, इस डिज़ाइन की कि स्वच्छ इकनॉमी होगी, क्लीन इंडिया होगा, क्लीन इकोनॉमिक्स होगी, तो मुझे आना ही चाहिए, चाहे मुझे 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने भी सहना पड़े। 70 साल से फिर आने वाले भी तो 70 साल हैं। आने वाले भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें साथ देना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ए वेल डिज़ाइन फॉर ए क्लीन इंडिया। और उसके जो कॉम्प्लिकेशन होंगे उसके साथ हमको देना चाहिए। एक विचार आपके। थैंक यू। सर, आप कुछ अपना Well, I would not comment on your question, but I would always say that to make a change, you have to be the change yourself first. We always blame government or other organizations, but till you take an initiative to do something, it will never happen. Like, I am not kind of person who says government ये करेगी तो मैं बैठी हूँ and I'm waiting for the new policy to come. If I feel that this is the area in Dharavi or Chembur or any of the slum which I need to get done and clean, I take my team and I reach there and I start my action. Because I feel when you do work, when you do good work, we never have to go homes and ask people to vote for us, हमें जिता दो। आप अच्छा काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग आपको चुनते हैं और आपके काम को सराहा जाता है। सो यू मस्ट ऑलवेज नॉट गेट इनटू द ब्लेम गेम कि हमारे पेडिस्टल टूटे हुए हैं, हमारी सड़कें गंदी हैं। आप अपना आजू बाजू साफ रखेंगे एंड वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन। इफ वी कैन इवन 50% ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट इन कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन, इट विल बिकम much better. Yeah.